ओके, नाउ वंस अगेन इसको हम देखते हैं। पिछले उसमें हमने देखा था प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब प्रोडक्ट पोजीशन करने के लिए एक्चुअल मार्केट मैपिंग किस तरह से की जाती है, ये मार्केट मैपिंग है कि किस तरह से वो किया जाता है। बेसिकली आप क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं इनटू क्वाड्रेंट्स एंड यू सी where the existing products are and where you want to place the product. For example, लोगों के जहन में चल रहा है कि जी दो किस्म के डिविजन्स प्रोडक्ट में हो सकते हैं, एक हाई प्राइस हो सकता है, एक लो प्राइस हो सकता है। और हाई प्राइस होगा तो हेल्थ इमेज भी हो सकता है, स्टैंडर्ड इमेज भी हो सकता है, और लो प्राइस होगा तो भी हेल्थ इमेज हो सकता है, स्टैंडर्ड इमेज हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप, कोका कोला को आप लेते हैं तो ये हाई प्राइस स्टैंडर्ड इमेज क्वाड्रेंट में आता है। अब ये जो मैप है ना, ये बिजनेस तो बना रहा है, लेकिन प्लेस अब करेंगे कस्टमर के जहन में कि ये प्रोडक्ट ऐसी होगी, हाई प्राइस एंड स्टैंडर्ड इमेज। डाइट कोक जो होती है वो भी हाई प्राइस होगी, लेकिन हेल्थ इमेज होगा, स्टैंडर्ड इमेज नहीं है, हेल्थ इमेज। इसी तरह से जो भी मिल्क ड्रिंक्स होती हैं वो वहां पे, अच्छा वहां पे मिल्क ड्रिंक्स सस्ती होती, यहाँ पे तो अगर मिल्क होगा, ताजा होगा, ऑर्गेनिक होगा तो महंगा होगा, वहां पे वो इतनी महंगी नहीं होती। तो होती हाई प्राइस है, लो प्राइस नहीं होती, बट नॉट वेरी हाई प्राइस, बट द इमेज इज हेल्थ इमेज एंड बेटर देन लेट्स से डाइट को। अच्छा, दूसरी चीज अब क्या आता है, सुपरमार्केट का जो अपना लेबल होता है, हर सुपरमार्केट में अपने लेबल्स होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड इमेज होते हैं, दे आर नॉट वेरी हाई प्राइस। नाउ हियर यू हैव लेट्स से this quadrant which is about free. You do not have a low product with a very high healthy image. This is where you can target the customer. You can make an ad or you can create a product which tells the customer that look, the price is low and the product is healthy. इसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जैसे होता है, आप सस्ती वेजिटेबल्स या उसका जूस बना के दे सकते हैं। Okay, like you take a radish, you take carrot, and you take another thing, take out its juice, put it and sell it. It will not cost you a lot, but it will be very healthy. ठीक है, ये बहुत रेडिश और ये चीजें जो होती हैं ये बड़ी हेल्दी चीजें होती हैं। हाँ, क्या क्या देखिए ये देखिए जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्टैंडर्ड इमेज की या हेल्थ इमेज की होती हैं और सस्ती बिकती हैं। हमारे यहाँ अगर कोई भी चीज जरा सी हेल्दी होगी तो वो महंगी बिकेगी, दैट इज नॉट समथिंग वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज वन प्लेस वेयर you have an opportunity to exploit the market. This is just an example, you can think about more examples. Okay, so the key definitions here are product, consumer durables. Consumer durables are those products which are consumed by the final consumer but they will last a long time. Brand, product position and all these things. This brings us to the concept of the product life cycle. जिस तरह से इंसान का एक लाइफ साइकिल होता है, जानवर का एक लाइफ साइकिल होता है, हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, किसी भी चीज की लाइफ इंडेफिनिट नहीं होती, इसी तरह से प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होगा। द प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, introduction stage, then it will grow means its sales will rise sharply. Okay, uh, that's the second. Then there is the third stage where sales will taper off, they will not rise, they will stabilize, and then sales will decline. Now what happens at the introduction stage? At the introduction stage, the product has entered the market, no one knows about it, it means that it will require heavy advertising. In the growth stage, the product is rising and paying for itself. In the introduction stage, you are basically putting money from your own pocket. In the growth stage, the product is growing, generating sales, but it is generating enough sales to pay for its own advertising. But you are still paying for advertising. You're not taking the money home. The cash flow. अच्छा, जब हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो we are talking about cash flow from the product. When we are talking about a business, we usually talking about profit from the business. There is a difference between the two. So introduction में cash flow
जो होगा वो नेगेटिव होगा इन अ सेंस। आप एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा खर्चा अपनी जेब से कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपको इतने पैसे दे नहीं रही है। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट आपको पैसे देगी, लेकिन आप वो पैसा वापस एडवर्टाइजिंग में लगा देंगे। मेच्योरिटी स्टेज में दिस इज द बेस्ट स्टेज, हियर यू डोंट रिक्वायर एनी एडवर्टाइजिंग, बेसिकली whatever money the product is giving you, whatever cash it is giving you, you can take it home. Decline stage mein the sales of the product begin to decline and you will again start experiencing negative cash flows. At the decline stage, no company wants the product to just disappear from the market. So what do? They put in certain features and try to extend the life of the product. This extending the life of the product is called extension strategies. ठीक है, आप उसकी पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं, कुछ नई एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, किसी नए सेगमेंट में जा सकते हैं. You can do various things. Okay, now product life cycle is something very useful. ठीक है, मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस आप इसमें कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ द कैश फ्लोज आर चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ साइकिल एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन use to build what is called a balanced product portfolio. Now, what is a product portfolio? That is important. Now, have a look at this again. This product, when the, let's call it product A, when it reaches the growth stage, okay, now you know that this product is going to decline. So what happens is that when it reaches let's say the stage, the maturity stage or high growth stage, at that point you launch another product. Okay, you launch another product. Then when that product reaches maturity, you need launch another product. When one company launches a series of products, a range of products, this is called a product portfolio. और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाने का एडवांटेज ये होता है कि जब एक प्रोडक्ट डिक्लाइन में जाती है, दूसरी मैच्योरिटी में आ रही होती है, तो आपको किसी भी स्टेज पर ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लोज सफर नहीं करने पड़ते. सो दैट इज द यूजफुलनेस ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच. ठीक है जी. इसी तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ये भी आपको बताता है कि कैश फ्लो कहाँ पे पॉजिटिव होंगे. आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले तो डेवलप करते हैं. डेवलपमेंट स्टेज में टोटल पैसा आप अपनी जेब से लगाते हैं. दैट इज एब्सोल्यूट नेगेटिव कैश फ्लोज. इंट्रोडक्शन स्टेज में द प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड गिविंग यू सम रिटर्न्स, some revenue it has started giving you. So the negative cash flows start becoming less, but they still remain negative. You still have to spend from your pocket because it is not generating enough sales to pay for its own advertising. In the growth stage, things start moving towards positive. अब वो इतना पैसा दे रहा है आपको कि आप उसको वो कर सकते हैं, तो अब हो जाएगा moving towards positive. In the maturity stage, the cash flow from the product is definitely positive. This is the best stage. And after that, when there is decline, again the cash flows move towards negative stage. Okay, so again there is a relationship between product life cycle and the, ये देखिए ये दोनों चीजें यहाँ पे मौजूद हैं. ये आप देखें कि यहाँ पे जब प्रोडक्ट डेवलप हो रही थी तो ये नेगेटिव कैश फ्लो था. जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई तो नेगेटिव कैश फ्लो ही रहा, बट इट स्टार्टेड बिकमिंग लेस. द नेगेटिव स्टार्टेड बिकमिंग लेस. देन व्हेन द प्रोडक्ट रीच्ड द ग्रोथ स्टेज, okay, you just about eliminated negative cash flow, but still not positive. In the maturity stage, you reap positive cash flows, and then in the decline stage, everything declines once again towards. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है. प्रोडक्ट ए आपने लॉन्च की. When this product reaches a certain stage, you launch product B in such a way that when product A is declining, product B is reaching maturity. When product B is declining, product C is reaching maturity. When product D is declining, when product C is declining, product D is reaching maturity. So if you look at it very closely, in reality, you can join all these points and get a straight positive line. In reality, you are getting this positive straight cash flows
The cash flows really are not going into decline, because the decline in the cash flow of one product is being offset by a number of other products. Such a portfolio is called balanced portfolio. In a balanced portfolio, the negative cash flow of one product are offset by the positive cash flows of other products. ये बात समझ में आ गई? Any questions? A product life cycle has its evaluation. Okay, so it's important for assessing the performance of the product. Okay, but what is the main problem? The main problem is it is based on past experience and past data. Okay, if a new situation comes up that was not there in the past, then the product lifecycle analysis will not be very useful, and this then will have to be used with other sales forecasting techniques. Sales forecasting techniques then are scientific bhi hoti hain, but they are based on the judgment of the manager as well. So it is the product is a very useful thing, and if it is properly designed, if it is properly made, if it is properly priced, if it is properly advertised, if it's properly placed, then it will bring about major benefits for the producer of the product. Any questions thus far? No, sir. Okay. Now let us go to price. The second thing is the pricing decision, and the pricing decision is again very important. इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर प्रोडक्ट जितनी भी अच्छी हो लेकिन उसकी प्राइस अच्छी नहीं है तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे. पीपल आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन इट. व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव द परचेजिंग पावर in relation to the cost that they have to incur. Think about the second C of the customer. The second C of the customer is, of course, this. Okay, we will continue this after a little break. Okay, just 2 minutes.